Esports or electronic sports has rapidly evolved into a billion-dollar industry, captivating millions worldwide. Major tournaments like the International for Dota 2 and League of Legends World Championship draw vast audiences and lucrative sponsorship deals, solidifying esports as a legitimate form of entertainment. One key advantage of esports is its accessibility. Players can compete from anywhere with a computer or console, fostering a diverse and inclusive community. This growth has created numerous career opportunities from professional players to coaches and content creators, further enhancing the industry's appeal. Notably, esports has gained recognition in prestigious events like the Commonwealth and the Asian Games, where it featured as a medal event. The potential for inclusion in the Olympics further emphasizes its legitimacy, as discussions around integrating esports into the Olympic framework continue to gain momentum. As technology advances, the potential for further growth in esports is immense. Innovations like virtual reality promise to enhance the gaming experience for players and spectators alike. Overall, esports represents a dynamic and lucrative sector, making a new era in competitive entertainment defined by accessibility, community, and innovation. In the landmark development for the future of esports in India, the Skillhub Online Games Federation entered into a 10-year strategic framework agreement with the Global Esports Federation, aiming to accelerate the growth of competitive esports in India and bringing an international spotlight to country's growing esports ecosystem. Hello and welcome to another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation related to sports, esports and much more. And today we have Mr. Paul J. Foster with us. He's the CEO of the Global Esports Federation, GEF. Pleasure having you, sir. Thank you very much, Ashwani. I hope you're enjoying India. It's wonderful. It's actually my first time ever in India. Oh, that's wonderful. So I'm very pleased to be here. Thank you. Thank you. It's a pleasure having you here. The esports industry has seen exponential growth in recent years, especially post-pandemic, if we say. What do you think is driving the esports market and the metaverse, especially in Asia and in India? Well, I think that it's a good question. I think that we're living in very interesting times. And if you think about what we've been through with COVID, for example, where we couldn't be together in physical sports and in sports stadiums, we were able to play games together and we were able to connect together through the virtual world. So I think that the continual growth of esports, around about 7% year on year, it's probably something owing to that. Rightly said, sir. How do you envision the role of global esports in shaping the future of esports in India, particularly? Yeah, we're really, really excited about India. I think that India, of course, has been in esports for a very long time, since the very beginning. And we're excited to help the growth and development in the country and in the region. And it's something we're doing across our 180 member federations. But we're particularly excited to be here in India and look at the opportunities, how we can be helpful to help grow in India. Yeah, perfect, sir. What is the great potential that esports offer to the global world economy in the current scenario? I think esports and gaming is seen at about $320 billion as an industry, and also something growing year on year. So the numbers sort of speak for themselves. But the true, I think the other thing that we would say is that we're just getting started. So there's a lot of opportunity for growth. There's a lot of opportunity for game creation, new games, new genre, and new ways of entertainment as well. And maybe also some industries on the margins of esports and gaming, for example, fashion, food, festivals, music, that will also come into the economy of esports and gaming. Rightly said, sir. More personal questions now. What attracted to you
that you found esports, and how does your experience in other sectors shape your approach to GEF? So I came from the Olympic movement. I'm from Sydney in Australia, so the Sydney Olympics in 2000 inspired me to think about sport and the benefits it can do for the world. And then 20 years later, the rise of esports and gaming was right there. So I decided to see how I could help esports and gaming. So Global Esports Federation, GEF, really sees itself as a convening body to bring all the aspects and sort of bring in the credibility, legitimacy, and prestige for esports. So I would like to think that we've been helpful in terms of shaping that ecosystem in a sustainable way. Rightly said. In your view, what are the biggest misconceptions around the esports industry, and how GEF is working to change those perceptions across the world? I think when we want to change perceptions, we also need to look at the reality. So some of the perceptions were actually part of the reality as well. So what we understand though with young people in particular is that they don't just want one thing, they want many things. Right. So some of them are really good students, they're also good gamers, they're also good sportsmen or women. So they would like to experience many different facets of life. So one of the things we are working closely on is health and wellness. Okay. And a small thing that we're doing is bringing awareness around a program we're doing together with UNESCO around what they call their flagship program called Fit for Life, encouraging young people to move their bodies at least 30 minutes a day, which is not too much. I think every young person could take that on board, and they could do that however they like, but that's encouraging their awareness around the importance of physical activity as well. Rightly said, for mind, body, and eyes. Exactly. And, things like one of the initiatives we have is safe listening. A lot of us like to listen to loud music or loud gaming, but there are some limits that we should be careful about and bring awareness. And oftentimes it's not because we're doing it on purpose, it's just we didn't have that knowledge. So GEF is trying to bring some of that knowledge front and center. Okay, so in terms of viewership and participation, how do you see the esports industry competing with the traditional sports? For example, cricket, if we have to compare football to FC and FIFA? I think that the future will not be so much competing, but complementing. And while you could possibly in the past be only watching one thing at a time or participating in one thing, now through social media and streaming platforms, we can actually do quite a few things at once. We can actually do that at once. But I think that for example, myself, my passion for traditional sport still exists, but I'm also very interested in gaming and esports as a spectator sport, as something that I find very compelling and interesting. So I don't see it necessarily as a competing one against the other, but more like a complementary part of what it is to be human in 2024. A beautiful balance can be created. Yes. Yeah. So how does GEF engage with the national governments and local organizations to establish esports as a legitimate and recognized sports globally? I think it's very different in different countries around the world. So we've been in different countries, and to help governments understand more, we staged the first ever Commonwealth Esports Championships at the Commonwealth Games in Birmingham in England 2 years ago. And that really changed perceptions of what esport was and brought awareness to that. We then, a lot of time it's about explaining what it is, sharing the opportunities, thinking about the economics of it, thinking about the business opportunities, thinking about the jobs that it might create, the educational opportunities that it might create for the citizens. So it's not one size fits all. I think we have to understand the market we're in, the needs of the market, and then we're able to, through our global network, apply the different resources we need in the different markets. How has been the response in Riyadh when the games and tour were held? It was fantastic to be in Riyadh. And Riyadh, of course, is a great story of progress because Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia, and Riyadh in particular, has really emerged as one of the true global hubs of esports and gaming. And this has happened in a very short period of time. And it's happened because of the tremendous focus of the leadership, and also the capabilities and the interests of the people, the citizens, listening to all of those people. And so our Global Esports Games last year was a remarkable games, and to be there at that particular moment in Riyadh in the story of its development was really, really exciting. So in India, when do you think we are ready for such big event? And what is going to be the format of it? Will Indian mythology be involved in the games?
That's interesting. I hadn't thought about that until you asked that question. But I think India is ready, and I think that and we are ready also for India. So it's a great match, and I think we want to help India tell the Indian story and do the Indian be part of the Indian evolution of its own journey in gaming and esports development. That's something I personally look very much forward to, and I know that many of our community around the world can't wait to come to India to see what it is, to see this enormous country of potential. I'm sure, sir. Esports governance is still a relatively new frontier. What steps is GEF taking to standardize and regulate the industry, especially with regard to ethical issues like doping, match fixing, and player welfare? Yeah, I think all of those things are important and they all have to be adopted. It's not something that you can necessarily fix overnight or address overnight. It's something that has to have a pathway, bringing expertise in, maybe people from, as a fairly new industry, bringing people in from other industries who have certain expertise. At Global Esports Federation, we have 13 commissions and councils that look at aspects that you raise, such as governance and ethics and health and wellness, for example, is one of our commissions that's chaired by a woman who's a medical physician, not only in the traditional sports world, but also esports. So bringing in some expertise who can really help shape the policy, shape the frameworks for development and growth. Right, so esports has the potential to create opportunities in education, job creation. What GEF's role in fostering these opportunities, particularly in developing nations like India? It's very, very exciting part of what we do. And when we're able to go around the world talking to industry, to government, to education, to entrepreneurs around the opportunities, create programs together, maybe help them primarily with knowledge exchange and support, but also create opportunities for programming and bringing awareness in. It's something that we're really excited about because we think there'll be huge amounts of jobs, sustainable jobs, real jobs, valuable jobs today, tomorrow, and the future. Your personal view on esports as a platform for fostering global unity, harmony, and cultural exchange, particularly through events like Global Esports Games? Well, I think the summary that I just learned this morning is that gaming is much more than a game. And the connection, our motto at Global Esports is world connected. So the notion is that when we connect and when we have fun together and when we play together and we connect, we get to learn about other cultures, we get to learn about other people, we get to connect with people that aren't just sitting in our space. And when we play more, we fight less. So we truly believe that this is like a real pathway to peace, to understanding, to also human connectivity. And we're excited to play our role in that. Beautifully said, sir. What are the key trends do you think and you believe will define the next 5 to 10 years in esports, and how is the world preparing for that and to leverage them? Well, one of the most exciting things was just the International Olympic Committee during the Paris 2024 Olympic Games announcing the Olympic Esports Games, which will start next year in Saudi Arabia in 2025. So that will be a really exciting thing, I think, for the whole world to watch. So that will be something that will really define, I think, that the next chapter. I think huge amounts of innovative technologies will also fuel the growth. Artificial intelligence will fuel the growth and make it more efficient to create games and to create statistics and become more equitable and able to reach. Technology will continue to evolve and improve and adapt and become perhaps more affordable so that more people in the world can participate and be connected. You spoke about AI. So what role does emerging technology such as artificial intelligence, virtual reality, and blockchain play in the future of esports? And how is the world embracing these advancements? So artificial intelligence has always been in esports and gaming, particularly game creation. And I think if you take a simple example of player statistics or player performance, artificial intelligence can play a really big part in that. If you take the commercial aspects, the benefits of artificial intelligence in terms of aggregating data and providing insights into performance, and also the performance of the competition itself in terms of the return on investment. Artificial intelligence will play a huge role in that. And so I think it's interesting because I think the community itself has adopted technologies, maybe even at a much faster pace than many other parts of society, because it's been part of our culture since the very beginning. So
how, as Jeff, work to ensure the esports remain accessible, be sustainable, especially in regions with limited technological infrastructure? The great thing about esports and gaming is you can actually right size it for the market where you are playing. Everyone can participate. So you can have a mobile game, you can have a large format game, you can have a small arena, a full stadium, indoors, online. There's lots of different modalities, and it's not one size fits all. And so in very, very small communities, you can still have the ability to have what we call grassroots competitions in schools, in different parts of communities, in universities, et cetera, But you can also have full-scale stadiums and full-scale competitions at the level that I've spoken about. So any message for the Indian audience who are watching this podcast where parents are concerned about children getting addicted to gaming and all? So how should they see this as a positive aspect of it and where they can build their career? I think competition and playing games is part of being human. We all like to play games, we all like to connect, we all like to compete as well. I think that's fun. But I think something we all need to bear in mind, all of us, is balance. You know, how do we create that balance? How does something move from being fun to being something that's no longer fun because our balance has shifted out? So I think the secret there, and it's something for everyone to think about, is how do they balance that to get the right balance? And a more personal question now. Any game that you love and you are addicted to? I'm not addicted to any games. My particular passion is around looking at live events and looking at different types of games. And I like everything from sports simulation games to MOBA games and mobile games as well, which has become a very, very exciting part, particularly in India. And I think to go to see an esports competition, I would encourage everyone to try to see how they could participate and see that, because there's nothing like being in real life. And that's very human, to be in a stadium together and be cheering for your favorite team or your favorite champion. So that's how I look at it. I like it for the spectator perspective and the fun aspect. What is the partnership between GEF and SOGF, the flagship that they are bringing in here, and what are the future plans for Indian subcontinent? I think we're working with SOGF to create as a promoter, as an organization that can help promote esports, both here in India and, as you said, across the subcontinent. And there's huge opportunities, huge population, many young people. And so this idea is that they're able to bring together maybe competitions or different aspects that they can really develop and flourish in the community. So that's the basis for the partnership. Thank you so much, sir, for coming to our podcast. Continuing the conversation furthermore now, we have Mr. Shankar Agarwal with us, President of SOGF. Thank you so much, sir, for coming to our podcast. सर, इस मीटिंग की बात और आगे बढ़ाते हैं. 10 ईयर की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की गई है जिसमें यू साइंड एन एग्रीमेंट विद जेफ. आपको शायद बताया होगा या आपको मालूम होगा कि ई गेमिंग इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे. करीब करीब 320 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री है, और जिसमें 3.2 का मतलब क्या हुआ, 3.2 बिलियन. पूरे दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब करीब 7 बिलियन है. यानी उसका 50% पॉपुलेशन ये ई स्पोर्ट्स के गेम्स को वॉच करती है, देखती है और प्लेयर हैं वो लोग. सो इट्स ए ह्यूज थिंग. सेकेंडली, अभी जब आप क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो जो लोग खेल रहे होते हैं वो उसको जो लोग वॉच कर रहे होते हैं वो उसको देखते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स का पार्ट बनना चाहते हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं बन पाते हैं. हम ये चाहते हैं कि ई स्पोर्ट्स के माध्यम से हर व्यक्ति, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बुजुर्ग, एवरीवन शुड बी अ प्लेयर. और अगर प्लेयर नहीं हो सकता तो कम से कम उस गेम को वो वॉच कर सके. क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग बाग इन्वॉल्व होते हैं और गेम खेलते हैं तो उससे कोऑपरेशन बढ़ता है, उससे कनेक्शन बढ़ता है, और जब कोऑपरेशन एंड कनेक्शन बढ़ता है तो दुनिया में पीस आती है. हम सब लोग बाग पीस लाने के लिए ज़रूरी है
हम एक दूसरे से आपस में बात करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और ये जो ई गेमिंग है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है टू स्पीक टू एवरीवन। सर, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ई स्पोर्ट्स कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबली, और स्पेसिफिकली अगर ग्रोइंग नेशन की बात करें, डेवलपिंग नेशन की बात करें, वहाँ पर इसका क्या पोटेंशियल है? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके 3 एरियाज हैं, 3 बकेट्स हैं मान लीजिए। एक तो वो बकेट है कि जो गेम को बनाते हैं, तो मान लीजिए आपने देखा होगा कोई भी गेम ले लीजिए आप, पैराट्रूपर है या कोई भी एक गेम देख लें, तो उसको जो बनाएगा तो वो क्रिएट करेगा, एक कंटेंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का एक गेम क्रिएट करेगा। तो पहली चीज़ तो वो है। उसमें बहुत सारे बच्चे लगते हैं उस गेम को, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। आपको मालूम होगा कि इंडिया इज सपोज टू बी द वर्ल्ड लीडर इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे बहुत सारे बच्चों को गुड क्वालिटी जॉब्स मिल सकते हैं वाइल क्रिएटिंग दीज गेम्स। सेकेंड, मशीन्स, जो गेम्स है वो किसी मशीन पे खेले जाएंगे। हो सकता है कि आज मोस्ट ऑफ दीज मशीन्स आर बीइंग इम्पोर्टेड, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत सारी ये मशीन हिंदुस्तान में बनने लग जाएंगी, तो उसको ये होगा। तीसरा जो है कि जब बहुत सारे लोग बाग इस पर खेलते हैं एंड जब बहुत सारे वो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो बहुत सारे लोग नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, नए नए सर्विसेज खरीदते हैं, एंड दैट एक तरह से जो इकोनॉमी को जो एक मूवमेंट होता है, उसे वो मूवमेंट चालू होता है। राइट सर, इंक्लूसिविटी की बात करें, आपने कहा कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसमें रहेंगे। सर, ट्रेनिंग की बात करें इनकी, तो ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनल एथलीट की ट्रेनिंग अलग होती है और जो घर बैठ के गेम खेल रहे हैं वो अलग होती है। तो एज अ वहाँ से जो उनकी जर्नी शुरू होगी टिल बीइंग अ प्रोफेशनल प्रो एथलीट, वहाँ पे फेडरेशन का क्या रोल रहेगा? वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे? एक एथलीट की पूल में से कैसे उस टैलेंट को हंट किया जाएगा? इसी जो भी हमारा टोटल पूल है, उसमें से हम बेस्ट कौन व्यक्ति हैं वो तो थ्रू कंपटीशन आएंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उसके बहुत तरह के सॉफ्टवेयर और बहुत तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने आप, जैसे मान लिया आप ब्रिज जाकर देख लो, आई डोंट नो आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। आई रेगुलरली प्ले ब्रिज ऑनलाइन, BBA जिसके उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सेल्फ लर्निंग की तरह से आपको बढ़ाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहता है, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब्स को देख के, ऑल दिस प्लेटफॉर्म को, जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली जब आप इम्प्रूव करते रहते हैं तो यू बिकम द चैम्पियन, सो देयर नो डाउट अबाउट दैट। वो सेल्फ उसमें हो जाएगा। द ओनली थिंग इज वी गॉट टू क्रिएट गुड क्वालिटी सच प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कम एंड दे कैन गेट ट्रेन देमसेल्फ ऑनलाइन, जिसकी ट्रेनिंग होती है। अब तो अभी देखेंगे कि इवन BSc MSc भी लोग या BA MA भी, और बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करते हैं। आपके जनरेशन के तो बहुत सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं? तो उसी तरीके से ये बच्चे ऑनलाइन करते हैं। एक और इसका जो एस्पेक्ट है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज। जब आप गेम खेलते हैं और स्पेशली जो माइंड स्पोर्ट्स खेलते हैं ऑनलाइन, तो आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, मतलब दिमाग की ये शक्ति कि हम गलत को, सही को, अच्छे को, बुरे को, कंपैरेटिव कोई चीज़ की एनालिसिस कर सकें, उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलते हैं, वो सतत इम्प्रूव होते हैं। और आने वाली दुनिया में वही आदमी, वही सोसाइटी, वही देश आगे बढ़ पाएगा जिसके पास ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होंगी। राइट सर, ई स्पोर्ट्स की बात करें, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कि अनएथिकल चीज़ें ना हो, जैसे डोपिंग, मैच फिक्सिंग, तो यहाँ पर फेडरेशन का क्या रोल रहता है? इससे कैसे ओवरकम किया जाए? वेरी गुड। यू सी, जितने भी इस तरह के नए नए चीज़ें चालू होती हैं या प्लेटफॉर्म चालू होते हैं या न्यू इनिशिएटिव होते हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, उन सब में एथिक्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम आपने बताई, इसकी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एंड ये ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए कि इन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक छोटा अंकुश रखा जाए, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो सके, लोग इसका मिसयूज़ नहीं कर सकें। जैसे इवन एटम बम है, मान लो एटॉमिक एनर्जी है, इसको हम हार्नेस कर सकते हैं गुड वर्क के लिए भी, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए भी। सिमिलरली इवन ई स्पोर्ट्स में गैम्बलिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, बेटिंग हो सकती है, होल लॉट ऑफ अदर अनडिजायरेबल थिंग हो सकती है, एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। उसके लिए ज़रूरी है कि एक हम कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएं। गवर्नमेंट के जो IT रूल्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट विल क्रिएट अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, लेकिन अब लोगों से बात करने के बाद ये लगता है कि दिस बॉडी कैन बी क्रिएटेड और शुड बी क्रिएटेड विद इन द गवर्नमेंट रादर देन गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ प्राइवेट बॉडी।
क्योंकि प्राइवेट बॉडी का हो सकता है कि क्लैश हो जाए उसके अपने इंटरेस्ट का एंड पब्लिक के इंटरेस्ट का। तो हो सकता है कि अभी शॉर्टली कभी बन जाएगी, मेरा को उम्मीद है कि अगले 6-8 महीने में जरूर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी, वेदर इट विल बी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और अ पब्लिक रेगुलेटरी और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। सर, टॉकिंग अबाउट न्यू पॉलिसीज, हर स्टेट अपनी अपनी एक एक नई पॉलिसी ला रहे हैं ई स्पोर्ट्स को लेके। हाउ डू यू थिंक दैट विल हेल्प इन बूमिंग द ई स्पोर्ट्स, और कहाँ कितनी लेवल पे हमें और आगे बढ़ना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो इसको बिलीव करता हूँ, लेट थाउजेंड फ्लैश ब्लू। हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी लाएगी, हर एक की पॉलिसी कॉम्पिटिटिव होगी, जिसकी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बेटर होगी, लोग वहीं पे उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। एज लॉन्ग एज दीज पॉलिसीज आर एडेरिंग टू द बिगर फ्रेमवर्क और रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए। तो जो रेगुलेटरी बॉडी ने नियम कानून बनाए उसके दायरे के अंदर रहते रहते जो भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा दैट इज ऑलवेज वेलकम, और जितनी पॉलिसीज होंगी उतना अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की एक पॉलिसी होगी, मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी होगी, तमिलनाडु की एक पॉलिसी होगी, जिसकी ज़्यादा अच्छी पॉलिसी होगी पीपल विल गो देयर। राइट सर, बात इंडियन इकोनॉमी की करें, ई स्पोर्ट्स जैसे यहाँ पे एज अ होस्ट सिटी हम अगर इंडिया को ले तो इकोनॉमी भी बढ़ती है, टूरिज्म भी बढ़ता है। Absolutely. व्हाट डू यू हैव टू स्पीक ऑन दैट? यू सी, एक तो क्या हुआ जो मैं आपको बता था कि जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जो हम गेम्स बनाएंगे, जो लोग बच्चे खेलेंगे, और उन सबको जब गेम्स का कोई चैंपियनशिप होती है तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे। इंडिया इतना बड़ा देश है और यहाँ पे अगर बाहर के देश लोग आते हैं तो एक इम्पेटस मिलता है हमारे टूरिज्म को। उनको देखा देखी बहुत सारे और लोग आते हैं, क्योंकि जब वो वापस अपने अपने देशों में जाएंगे, बताएंगे हिंदुस्तान के बारे में, और इंडिया कैन ऑफर यू सो मच, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन ऑफर दैट मच ऑफ वैरायटी। तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म को फ़ायदा होगा। तो टूरिज्म को जब फ़ायदा होता है तो टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि बहुत छोटे लेवल के भी व्यक्ति को इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है, बिकॉज ही और शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल हिज और हर गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, कोई गाइड होगा, कोई कुछ सामान बेचने वाला होगा, कोई स्ट्रीट फूड बेचेगा, कोई बड़े रेस्टोरेंट में बेचेगा। आजकल अगर आप देखें, सब लोग बाहर के देशों में जाते हैं और छोटे छोटे देश वो अपने टूरिज्म को इतना अट्रैक्टिव बना के रखते हैं जिससे कि उनका पूरा देश ही टूरिज्म की इंडस्ट्री पे चलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जबकि इतना बहुत पोटेंशियल है, वी आर नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट सो मेनी पीपल। आई एम क्वाइट श्योर this e-gaming would help us in attracting lot of people and lot of those tourists who can spend lot of money in India. राइट सर, ई स्पोर्ट्स में इंडिजिनस टाइप ऑफ गेम को इंक्लूड करने का क्या चांसेस है? बहुत चांस है, इसे हर चीज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए महाभारत बेस्ड कोई हो या रामायण बेस्ड हो या इस तरह का कोई भी गेम आप सोच लीजिए, वो आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, गेम को बनाना इज अ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज लाइक मेकिंग अ फिल्म। तो आप एक फिल्म बनाते हो 100 करोड़ रुपए में, 200 करोड़ रुपए में, ये बनती है $1 बिलियन में, यानी 4,000-5,000 करोड़ रुपए में बन जाएगी आपकी, 6,000 करोड़ में बनेगी। तो उसके लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी फ़िलहाल ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है जो हम इतने पैसा लगा सकें, बट श्योरली लॉट ऑफ पीपल कैन कम फ्रॉम इवन अब्रॉड एंड देन दे कैन क्रिएट अ गेम बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इंडिया। राइट, राइट सर, ई स्पोर्ट्स की गेमिंग टूर की बात करें, प्राइस पूल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका रीज़न क्या है और कैसे इंडियन ऑडियंस उस चीज़ में पार्टिसिपेट? अभी 3.32 बिलियन पीपल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके से ई गेम से जुड़ी है। आप उनसे 1-1 रुपए भी, 2-2 रुपए भी, 10-10 रुपए भी कलेक्ट करें तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। राइट, सो ई गेमिंग हैज गॉट लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई इट इज सस्टेनेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस। राइटली सेड सर, ये काफ़ी ब्लूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है और इसे हार्नेस किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। द ओनली थिंग जो आपने बताया, इट हैज़ टू बी विद इन एक जो रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के दायरे के अंदर रहना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, पॉडकास्ट में आने के लिए एंड इंसाइट देने के लिए ई स्पोर्ट्स की दुनिया की। थैंक यू सो मच। Continuing the conversation further, we have Gursharan Singh Ji, Secretary General Skillhub Online Gaming Federation. Thank you so much sir, पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। 10 ईयर का अग्रीमेंट साइन हुआ है जेफ के साथ, ये कैसे इंडिया में ई स्पोर्ट्स को प्रोपेल करेगा? क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे इंडियन एथलीट्स को, ई स्पोर्ट्स एथलीट को स्पेसिफिकली? देखिए, जो जेफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन से हैं,
जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है, which is one of the international federations. There are only 2 international federations which are recognized by International Olympic Committee. GEF, Global Esports Federation is one of them. हमारा जो SOGF है, स्किल हब ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन है, वो भी एक फेडरेशन हमने फॉर्म किया इंडिया में टू प्रमोट एंड डेवलप ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। अभी तक ई स्पोर्ट्स जो इंडिया में है वो एक बड़ी नेसेंट स्केल में है, ऑल्दो इंडियंस आर एंगेज्ड इन गेमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन इंडिया it is not very very popular, and also not many people know about it, neither they are engaged. However, now when we are signing a strategic partnership with GEF, so our aim is solely to promote and develop esports into India, because esports is now part of the Olympics. IOC has already recognized esport. From next year onward, 2025, esports Olympic Championship will start. Mr. Paul mentioned that the online gaming will be held in India at a larger scale. What do you have to say about that? Definitely ये भी हमारा एम है, जो कि हमने जो पार्टनरशिप साइन की है कि हम इंडिया में इसको डेवलप करें और एक बहुत बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट्स चैंपियनशिप ये इधर कराएं डिफरेंट गेम्स में, बिकॉज आईओसी ने कई गेम्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो अनलेस वी डेवलप दिस गेम, तो इंडियन एथलीट्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक्स में? सो इट इज आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इंडियन एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक गेम्स एंड वेरियस अदर global games to win the medals for the country. So what all games will be included here? एंड ऐसे गेम जो इंडिया में एक्सेसिबल है अभी? नहीं, देखिए जो आईओसी ने अभी रिकग्नाइज किए हैं उसमें 8-9 गेम्स हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, आर्चरी है, टेनिस है, टाइक्वांडो है, मोटर स्पोर्ट है, ऐसे 8-9 गेम्स जो कि जिसका एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे कि बच्चे एथलीट्स खेलेंगे। तो उसको हमने डेवलप करना है, उनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, उनको सेलेक्ट करना है कंट्री के लिए, सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। राइट सर, एनी गेम दैट इज डेवलप्ड इन इंडिया जो कि इस गेमिंग टूर का पार्ट रहेगा? बिल्कुल, हमारा भी ये एम है। पहले तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें आपको एक्सेल करना है, साइमल्टेनियसली गेम को भी डेवलप करना है। वो गेम डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि डेवलप कर लिया, उसको गेम को रिकग्नाइज भी करे, आईओसी रिकग्नाइज करे या इंटरनेशनल कोई बॉडी रिकग्नाइज करे, तभी उसका फायदा है। क्योंकि अगर गेम सिर्फ डेवलप किया जिसको भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं हुआ तो उसका वो भी फायदा नहीं है। तो हमें पहले अपनी एक रिकग्निशन बनानी है, अपनी एज कंट्री की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। साइमल्टेनियसली हमें गेम भी डेवलप करना है जिसको कि हमारी रेपुटेशन के हिसाब से, क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उसको रिकग्नाइज भी करे। सर, एज अ फेडरेशन कोचेस कैसे हायर हो रहे हैं, वो टैलेंट हंट कैसे किया जा रहा है? वो तो हम सारा जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो हम ये GEF से लेंगे या जो दूसरी एक फेडरेशन है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, उनसे लेंगे। हम अपने कोचेस और अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स ट्रेन करेंगे एज पर उनके जो एजुकेटर्स आएंगे, वो क्लासेस लेंगे, वर्कशॉप लेंगे। वो जो हमारे ट्रेन होंगे उनको फर्दर ट्रेन दी ट्रेनर इंडिया में प्रोग्राम करेंगे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे। सर, स्किल की ट्रेनिंग की बात कर ली, साथ में उनकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कुछ किया जाएगा? न्यूट्रिशन बेस्ड, क्या उनके आईज के लिए जो एक्सरसाइजेज होती है एक पेयर के लिए, वो क्या कुछ आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं एज अ फेडरेशन? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए एथलीट्स को जो कि स्पोर्ट्स में एंगेज्ड हैं। तो उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए हम प्रोग्राम्स करेंगे। उनकी जो उनकी न्यूट्रिशन के लिए बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए हम मेडिकल, हमारी एक कमेटी होगी, वो उसको अवेयरनेस करेगी। जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स बनेंगे या कोचेस बनेंगे, उनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है उनको अपने एथलीट्स को इसको मतलब टीच करने का, कि उसको क्या क्या चीज़ों को उसको अडॉप्ट करना है इस गेम में एक्सेल करने के लिए।
तो ये सब चीज़ें हम उसमें एज पर दी जो भी गाइडलाइन होगी आईओसी की, वो सब हम इसमें लागू करेंगे। सर टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया में अभी क्या अवेलेबल है टेक्नोलॉजी इस लेवल पे टूर करवाने के लिए, बड़े गेम्स करवाने के लिए? देखिए, इंडिया लीडर है इस टाइम टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में इंडिया इस टाइम लीडर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया बनाता है और यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज। तो हम चाह रहे हैं कि जो इंडिया बना रहा है वो इंडियंस भी उसको यूज़ करें, उसमें एक्सेल करें, और एक ना कि सिर्फ बना के एक चीज़ दूसरे को दें, बल्कि उसको हम अपनी कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। सर एनी मैसेज फॉर द इंडियन ऑडियंस, इंडियन पेरेंट्स जिनको मिसकंसेप्शंस है ई स्पोर्ट्स के अराउंड कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना फ्यूचर पोटेंशियल है? देखिए, ई स्पोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज के दिन में ग्लोबल ई स्पोर्ट का मार्केट $320 बिलियन के करीब है। इंडिया में सिर्फ 30,000 करोड़ के करीब है। लेकिन इसमें हम जो है जितने भी यूथ्स हैं हमारे, उसको उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए, उनकी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनका जो पर्पसफुल टाइम है स्पेंड करने के लिए, उनको ई स्पोर्ट्स में हम एंगेज करेंगे तो वो इस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, अपनी कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एथलीट है इसमें, जैसे जो ओलंपिक स्पोर्ट है, जो फिजिकल स्पोर्ट है, उसमें आपका मतलब फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। इसमें फिजिकल फिटनेस की भी जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे या कहीं पर भी बैठे किसी स्केल में आप इसमें एंगेज कर सकते हो अपने को, और आप इसमें एक्सेल कर सकते हो। आप अपने को इस लेवल पे ले जा सकते हो कि आप ओलंपिक मेडल जीत सकते हो, जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक बून है। क्योंकि इंडिया में इतने पॉपुलेशन है जो कि टेक्निकली, जो कि आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, और इंडिया का स्किल जो है पूरे वर्ल्ड में माना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम प्रमोट एंड डेवलप करके एक वर्ल्ड में हम लीडर बने। राइट सर, एशियन गेम्स में हमारे मेडल आए थे, एंड होपफुली जब ओलंपिक्स में ई स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए वहाँ पे भी हमारा मेडल है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि मेडल आए, हम लीड करें। राइट सर, हाँ, टैलेंट की कमी नहीं है, एंड वी हैव सच ग्रेट टैलेंट पूल हियर इन इंडिया who are doing well in esports. Correct. Thank you so much, sir, for coming to our podcast. Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, signing off, and you were watching Beyond Scoreboard.